Olá, boa tarde. A história de Sadat, uma rapariga cristã paquistanesa de apenas 12 anos, raptada, abusada sexualmente e forçada a casar e a converter-se ao Islão, é apenas um dos muitos exemplos trágicos de violência contra as jovens raparigas e mulheres deste país, onde a comunidade cristã vive também o flagelo da lei da blasfémia. Este vai ser um tema para desenvolver no documentário desta semana da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. My name is Nazir Bhatti. I work 5-6 years with Shabazz Bhatti in his house as a cook. I know him from the childhood because we are from same village, and when he come minister, so he called me, please you come with me, work with me. Strong faith on Jesus, very, very strong faith. And he have some threat from the people, like some people they threat him, we are going to kill him. And he says, I'm not going to afraid from you. Christian, we born Christian, we know Jesus gave us a life. So our life is only with Jesus. We have no life in other religions. मेरा नाम बशारत खोखर है और मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ और मैं इंसानी हकूक़ के लिए पाकिस्तान में स्पेशली मिनॉरिटीज़ राइट्स के लिए काम करता हूँ। शहबाज भट्टी साहब हमारे पुराने दोस्त थे क्योंकि मैं CLF का हिस्सा रहा हूँ और CLF के बाद जब ये शहबाज भट्टी साहब ने इस्लामाबाद से लाहौर ऑफिस शिफ्ट किया, ये मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा कि 2007 में हमने एक रूरल एरिया में चर्च बनाने की वो चर्च की मुखालफत कर रहे थे और हमें बार बार ये धमकी दी जाती थी कि आप चर्च यहाँ ना बनाओ और ये जगह छोड़कर चले जाओ। इसके हमारे बाद ना नहीं पर उन्होंने हमारे पर झूठा एक तौहीन रसालत का मुकदमा थाना आरा बाज़ार रावलपिंडी में अननोन के ख़िलाफ़ दर्ज किया, जिसमें हमें नामज़द किया गया। इस केस में मैंने 5 महीने 10 दिन जेल काटी है। वो जो सज़ाए मौत की कोठड़ी होती है उसमें हमें बंद कर दिया गया था दोनों को, और हमें धूप हमने 5 महीने बाद देखी, वहाँ पे धूप भी नहीं आती कि जेल के अंदर मेरी ज़िंदगी इतनी अहमियत रखी थी। बाइबल और मैं हम एक इकट्ठे जीते थे, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे। मेरी ज़िंदगी अकीदे के बगैर बेमानी है। My name is Yunus Masih. We live in South Quarter. It's in F62 Islamabad. There are mostly 600 to 700 families are living in this area. In 2009, he studied in the Bahriya College. He came out for the off time. So we crossed the gate. There was one suicide bomber who came there and he blasted. So I don't have any injury. He have a injury with the spinal cord. His right side is paralyzed. Lot of time I apply the government jobs.
If your name is Yunus Masih, kind of this name, Christian names, they don't prefer you. They prefer the Muslim peoples. They prefer these Christian peoples for the cleaners, these kind of lower jobs. Because it's a Pakistani law, the who person is a Christian, they can't cook for the Muslim peoples. They can't take a license to open a restaurant. So economic opportunities, whereas they do not exist for minorities, the law does not treat everyone as equal in the electoral system, in the education system, deprived religious minorities of some of the economic rights. Our forefathers are Christians. We live in Christian families. We give the life to Jesus Christ. Jesus Christ gave life for us. That's our faith on Jesus Christ. They want to tell something about their faith. They are always blamed for something else. I have studied in a village, and I was the only Christian boy in the school where I was not able to drink the water from the same pump or maybe the cooler or glass. If I am somehow or the other have touched, so that is not impure, they throw it out. The concept at the back of this maybe is one is religion, and the one is all these Christians are converted from the lower caste of Hindus. In my school, I was the responsible of my class leader, but I was blamed. So no, a Christian cannot be leader. So the school principal, he put a task in front of me. He said, a Christian leader cannot be leader of Muslims, or if he wants to be leader, then in the morning in assembly when all the students they come in lines, he should recite Quran. Then my father, he said, you are student, and doesn't matter, you have to learn it, and if they ask you, go for it. In higher education level, when anyone applies for higher education degree or for a government job, 15 to 20 grace marks, depending on which province we are from, is awarded to those members who have studied the Quran by heart. मेरा नाम पास्टर जदाउन मसीह गिल है। इस गांव का नाम मक्खन कॉलोनी। जिस इलाके में ये केस था, उस इलाके में ज़रा ख़तरा था, इस वजह से हम वहाँ से इस जगह पे शिफ्ट हो गए। नहीं, इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। वहाँ पे मुखालफत थी उसके साथ चर्च में, जिसकी वजह से ये मुस्लिम लोगों के साथ जो था वो काफ़ी झगड़ा था। उसके बाद फिर केस चलता रहा, फैमिली जो सारी डिस्टर्ब और बड़ी परेशान। 6 महीने तक तो कोई लॉ नहीं सी, कोई नहीं सी ना। 50 फीट का वो हॉल था जहाँ अंदर। If non-Muslim accused for this case, so whole community will face the problem. And even then, if a person acquitted innocent and acquitted from the case, even then she cannot live in the same locality. हाँ, एक दफ़ा हुआ था जब जेल जाने से पहले हम यीशु को मानते हैं, खुदा के बेटे को मानते हैं, कोई बात नहीं। पतरस को भी आई, पौलुस को भी आई। हाँ, जेल में वो जो हमें कमरा दिया गया था उसी में हम दुआ करते थे। रोज़मर्रा ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत है और हर रोज़ मजबूत होता है। खुदा की गवाही है, क्यों मुझे दिल के करीब खुदा के कलाम में लिखा गया कि तू अपने पूरे दिल और जान और रूह से खुदा की बात कर, तो मैं तुझे हर मुश्किल से आज़ाद करूँगा। The Christian community is scattered in the whole province, but if you look at the city of Lahore, Johannabad is one of the most densely populated Christian settlements. मेरा नाम चीज़ा योहनाबाद में इतने रहते फिर जो साढ़े ते केस बनया सी फिर उन्होंने मतलब जी तंजीम ने साढ़ा केस हैंडल किया सी ना
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। That's where Christian and this side is Muslim people. So even I didn't go there, it's this side carried me. The people see and boys us. Because we are trouble this problem, the people know about our case. There is her father burned the Quran. ਕੇਸ ਯੂਸੁਫ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯੂਸੁਫ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2005 First, whenever they got an information about this kind of incident, they immediately arrest the person and never ever conduct the proper investigation. ਜੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਧੱਕੇ ਠੇਡਿਆਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਠਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਐਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੰਦ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਨਨਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਯਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। The blasphemy law is used as a political tool of dominance. So if you are a Christian or an Ahmadi or even a Muslim sometimes, I can point to you and say, you have blasphemed against the Holy Prophet. And then maybe a crowd will gather around and they will lynch you. They will attack the family, they will attack the settlements over there. So the victim, he suffers, his family suffers, and the whole community sometimes they have to suffer. This is lack of security. Or even I have saw that the people killed in the hands of police. There was a twin bombing at 2 churches in Johannabad in 2015. At the same time, there were 2 suicide bombers. They have attacked on both churches. So our church here, we got 2 people died here in our church. Another track, there were more than 17 people, they died. In the last 2019 years, as the church has suffered a lot, and then our people feel that they are also suffering with the Christ, and then their faith is very strong, very strong. Thank God that after the blast, so many people are coming. In this church, we celebrate 3 masses, and then each mass is, first mass is more than 4,000 people are there. The prosecution system here is very weak, vague, and not in accordance with law, because mostly they are untrained people and have no idea what kind of case. They are putting people purposely, intentionally behind the bar, and all the time when we get the information, they said no, the investigation process is underway, then we cannot give the information. In the case of Asia Bibi, she was in jail for over 9 years. Similarly, there are many other blasphemy accused victims who are sitting in jail for over 7 years, over 4 years, over 5 years, because the case just continues and it's non-bailable, so they continue to remain in jail. I am also under threat and also unable to visit my office since last 10 months. I am counseling 6 cases in blasphemy cases, and I am following 2 very old cases before the Supreme Court. You know, when this was the case of Asia Bibi, when she was released, I was the one when we reached there in 2009 when it was happened. This case was happened. So we were also in the High Court as well. And the friends who are here, like-minded friends, who stopped me not to visit the courts, please. Because the threat they have made, that was not tackled too easy. It is difficult. Because if we have not peace in mind, how we can defend these kind of cases? All the time we are under threat. So that's why this is a difficult time for us.
There was an attack in 2013 in Joseph Colony in Lahore also, where over 116 houses were torched and burnt down. This attack was also on the basis that one of the members from that neighborhood was accused of blasphemy, and then the mob came and attacked. साबर मसीह नाम है मेरा। मैं ऑटो पार्ट्स या मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं ना, इनका काम करता हूँ। एज ए ऑपरेटर हूँ उधर। ये जोसेफ कॉलोनी में ये ज़्यादातर है ना जो आड़तें वगैरह हैं, इसका लोया वगैरह डालते हैं इधर। ये शुरू से ही जब से मैं पैदा हुआ ना, तकरीबन मेरी 32 या 3 ईयर एज है। तकरीबन उससे पहले कहीं ना इधर है ना ये बरादरी है, मसीह बरादरी की एक जगह मखसूस कर दी हुई है इन्होंने। 2 चर्चेज़ हैं इधर हमारे मोहल्ले में। हाँ जी, तो 2 घर में चर्च बनाए हुए हैं उन्होंने खुद। तकरीबन है ना मिनिमम भी 200 है ना जो बाइबल मुकद्दस होगी कम से कम एक चर्च में, वो सारी जला दी इन्होंने। उसके बाद ये ना कह रहे थे कि वाक़या ना बुध का था, जब आपके भाई ने ना खिलाफ रसूल बताया इन्होंने। हाँ जी, बाद में पेश करवाया, बाद में इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के इनको हाँ जी बाद में जेल में डाल दिया इनको। हाँ जी, तोड़ फोड़ की है और ये दरवाजे को काफ़ी वगैरह ईंटें वगैरह और ठुड्डे वगैरह ना इसने बहुत ज़ोर से लगाए। हाँ जी, बाद में है ना जो इन्होंने कहा कि ये अपना घर खाली कर दो, ये चल जाए, आपकी जानों को खतरा है इधर। जो एरियाज इधर और एरन एरियाज लोहे कारोबार, और दैट टाइम इज द पीपल लाइक टू द प्रॉपर्टीज। आम ज़िंदगी में ज़्यादातर तो यही होता है, मेरी तो गैदरिंग है मुस्लिम। हाँ जी, वो ज़्यादातर मुझे यही कहते हैं कि आप मुस्लिम हो, ठीक है। खाने पीने में मेरे साथ कुछ नहीं होता। जो मेरे जूनियर हैं ना वो क्रिश्चियन हैं, जो हमारे अभी जो जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ उधर के लड़के, उधर के जो मुस्लिम मेरे दोस्त भी हैं, वो उनकी यानी कि छुई हुई चीज़ में यानी कि उसको चेक नहीं करते हैं। अगर ये क्रिश्चियन ना हो तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाए, बहुत ज़्यादा अहमियत है। मेरे खून में मसीह है। मैं दूध लेने के लिए गई थी तो घर में कोई भी नहीं, तो उसकी नगीना ने, उसकी बहन ने आवाज़ दी मुझे, तो सप्तैन, तो मैं उनके घर गई थी। तो बाद में वो जो उनसे नगीना है उसने पता नहीं क्या किया था, बाद में ये बेहोश करके पता नहीं कहाँ पर लेके गए थे। तो बाद में सप्ताह ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। उन्होंने निकाह पे बुलाया था, घर पे मौलवी बुलाया था, क्या किया था? नहीं, वहाँ पे वकील के पास। ओके, उन्होंने कैसे आपको फोर्स किया था इस्लाम कबूल करने के लिए? सप्ताह जौन से है ना उसका पापा, वो मुझे धमकियाँ देते थे भी जौन साहब का छोटा भाई, हम उसे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कोई साफ़ पेपर था, उनके ऊपर इन्होंने साइन करवा लिए थे, लेकिन मुझे नहीं था पता ये इन्होंने क्या करना है क्या। फैसलाबाद लेके जा रहे तो रास्ते में फिरोजपुर आके ना तो बस रुकी, तो मैं वॉशरूम के बहाने ना नीचे उतर के, बाद में पापा का मुझे नंबर आता था, मैंने पापा को कॉल की। उसके बाद उन्होंने मेरे ना पुलिस वालों के पेश किया था वहाँ पे। अभी मैं यही फील करती हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे माँ बाप भी क्रिश्चियन है, ये मैं फील करती हूँ। Predominantly there were Hindu girls and Christian girls who were being forcibly either abducted and then forcibly converted and married off.
So yes, we've got those figures. They are even every year that we've been documenting is over 700. But the problem with this is that it's hard to also differentiate at times, which is exactly because there's so much of fear even in the courts. Girls go in the court and there is pressure with the other party, and she says that I have converted to this religion with my freedom. Majority of the girls, they are from the poor family. They kidnap, and after that they will say that no, she has come to in our religion. So what we can say? Despite the attacks on churches, bomb attacks, terrorist attacks, next Sunday you will see that the church will be full. Our gospel and our Jesus says, because of my names you will be suffer, be strong, and next time forgive them and nothing will happen. So our parents' faith helps us to overcome over that feeling. Of course, being human, we were hurt and we feel that why they are treating us like that. You are the salt of the earth, and the Christian community or the church has served this nation, and we want to continue to play our role and give our contribution for the progress and good of Pakistan. For the world, I would say continue to pray. Pray for the Christians over here who get persecuted, who time and again are discriminated, because moving and running away from this country is not the solution.